Hello guys, how are you? So we have here with us a mixed difficulty question pack. Okay, so a lot of questions to go for. So we will, without wasting much time, we will just go for the questions. So a lot of questions to go for. So we will, without wasting much time, we will just wasting much time.
Oh, thank God. Finally, Yash Jha, being the leader that he is, has pointed that you don't have the sound. Thank you so much. अभी तक मैं बक रहा था एक तरीके से और किसी ने कुछ सुना ही नहीं. तो ये पैसेज जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. Yash, if you are there, we can like have a conversation on this passage. Can you hear me? I was muted on YouTube. My bad, buddies. If you are there, Yash, let me know. Okay, Yash might have exited. Let us go ahead and start from the beginning. तो guys, ये passage बहुत ही interesting है. ठीक है? It's about religion. Yeah, perfect, Yash. So, religion debate के ऊपर है ये passage, and I'm solving it for the first time with you guys. तो जब कॉम्प्लेक्स, आज का टॉपिक यही है कि जब कॉम्प्लेक्स पैसेजेस एक्ट में होंगे तो हाउ शुड वी रीड. ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स पैसेजेस होते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं जो मैंने शुरू में म्यूट में दे दिया है, तो रिपीट कर देता हूं. ठीक है, होता क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज देख के हम बोर हो जाते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम. ठीक है, और वो जो बोर्डम आता है, इट इज वेरी बैड फॉर योर पैसेज सॉल्विंग स्किल्स इन एन एग्जाम ऑफ सच स्टेक्स एज दैट. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के साथ तुम्हें कंफर्ट डेवलप करना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में. न्यू ईयर के बाद तुरंत, ऑफ कोर्स न्यू ईयर में तो नहीं पढ़ोगे तुम लोग. ठीक है, एंड रीडिंग स्पीड्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिकॉज फास्टर यू रीड, द फास्टर यू रीड इन एन एग्जाम लाइक दैट, द लेसर यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सो एक तरीके से आपको करना क्या है कि यू हैव टू कीप योर रीडिंग स्पीड्स एट अ नॉमिनल रेट, कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट प्रॉपरली, एंड मतलब रीडिंग स्पीड्स को ना ज्यादा बढ़ाओ ना ज्यादा कम कर दो, लेकिन फर्स्ट टाइम जो रीड करोगे ना आप, उसको बहुत डीपली करो, बिकॉज द फर्स्ट टाइम रीड व्हेन इट हैपेंस, दैट डिसाइड्स वेदर यू विल गेट द क्वेश्चंस करेक्ट और नॉट इन अ वे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. राइट, तो कॉम्प्लेक्स रीडिंग से डरो मत, पहला पॉइंट, ज़ैट जैसे एग्जाम्स में. दूसरा पॉइंट, रीडिंग स्पीड्स को कंट्रोल में रखो, डोंट गेट हरीड बाय द क्लॉक. क्लॉक टिक करता रहेगा अपने जोन से, तुम अपने जोन से सॉल्व करो. Okay, you have to come to your zone. And finally, imagination करते करते पढ़ो. तो ये देखते हैं जरा इस पैसेज को. The story of Sir Gawain and Green Knight has its foundation in the Arthurian legend as formulated and passed down by the pagan oral tradition. कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ. पेगन ओरल ट्रेडिशन क्या है मुझे पता है. ठीक है, पेगन ओरल ट्रेडिशन है जब पुराने जमाने में जब नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर को हम पूछते थे. विंड देवता हो गया या आग देवता हो गया, वो पेगन आइडियल्स थे सारे. ठीक है, तो यानी कि बहुत, ये जो स्टोरी है बस इतना कहा जा रहा है कि इट्स फाउंडेशन इज एन आर्थुरियन लेजेंड एंड इट वाज फॉर्मुलेटेड एंड पास्ड डाउन बाय द पेगन ओरल ट्रेडिशन. इन इट्स रिटन फॉर्म, हाउएवर, जैसे ही ये वर्ड्स आए ना, हाउएवर, nonetheless, nevertheless, be very careful, क्योंकि इनमें से ऑथर का ओपिनियन निकलता है. ठीक है, इन इट्स रिटन फॉर्म हाउएवर, तो हाउएवर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ओरल ट्रेडिशन था. ठीक है, तो रिटन फॉर्म में कुछ और होगा. द टेल bears the marks of Christian influence. It contains numerous scriptural and doctrinal references to Christianity. तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ इस पूरे फर्स्ट लाइन का, चंक का, कि भाई ओरल ट्रेडिशन में पेगनिज्म था और रिटन फॉर्म में उसमें क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं. ऑथर ने ये बोला है. ठीक है, सिंस द ऑथर ऑफ सर गवाइन एंड ग्रीन नाइट इज अननोन, अरे बाप रे, यानी कि ऑथर हमें पता ही नहीं है कौन है इसका. इट कंटेन्स न्यू, it is difficult to determine with any certainty the extent to which he was responsible for the incorporation of Christianity into the legend. तो यानी ऑथर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठा दे रहा है, और वो क्या है कि हम नहीं पता कर सकते कि ऑथर कौन है. पहला, हु इज द ऑथर, वी डोंट नो. और दूसरा, उसमें कितना क्रिश्चियनिटी है और कितना पेगनिज्म है, ये बात हम नहीं पता कर सकते. और उसके लिए ऑथर कितना रिस्पॉन्सिबल है, वी डोंट नो दैट ऑल्सो.
ठीक है, फॉर ऑल वी नो, हमें जितना भी पता है उसके हिसाब से द स्टोरी में हैव बीन क्रिश्चियनाइज्ड, यानी कि पहले वो पेगन से शुरू हुआ हो सकता है, फिर उसको जानबूझकर क्रिश्चियनाइज किया जा सकता है इन इट्स ओरल फॉर्म लॉन्ग बिफोर द पोएट सेट इनटू राइटिंग। तो पोएट के उसको लिखने से पहले ही उसको क्रिश्चियनाइज कर दिया जा सकता है एक तरीके से, ठीक है। The poet himself supports this possibility by writing in the opening lines that he will tell anew the tale has heard it in the hall। तो यानी कि वो टेल को ऑथर ने सुना, और मतलब पोएट ने सुना और फिर उसको लिखा, और उस लिखने से पहले ही वो क्रिश्चियनाइज हो गया था, ठीक है। If this is the case, and even if it is not, it is distinctly possible that the heroes of the Arthurian tradition represent in the written form a pagan interpretation of Christian ideals। तो यानी कि ये जो हीरोज हैं, ये पॉसिबल है कि ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, rather than an externally imposed Christianization of pagan codes of behavior, rather than कि उसको बाहर से लगाया गया, वो रिप्रेजेंट ही यही करते हैं। आई थिंक ये फर्स्ट पैरा इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। I would like Yash to try this question, and others, if you can, please go for it, and let's see whether you are correct or not. Okay? No, this is not a test; it's study, so take your chances, but gamble mat karo, of course. अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग गाइस, कीपिंग एन आई ऑन इट। I will wait for 1 minute, okay, for your solutions. तो देखते हैं ऑप्शंस का एलिमिनेशन। ऑप्शन 1 कहता है, यश आई वाज वेटिंग फॉर योर आंसर, इफ यू आर देयर। इससे थोड़ा सा मतलब अगर इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड यश। अच्छा यश, एक काम करो, कोई भी एक आंसर दो जो तुम्हें लग रहा है, व्हाटएवर यू थिंक, ठीक है, नो वरीज। ठीक है, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन शुरू कर रहा हूं। ऑप्शन 1 बोल रहा है कि एज एन ओरली हैंडेड डाउन टेल। ओके, सी आंसर है यश का। सी बोल रहा है 3 ओनली, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रिलियंट यश, क्या बात है। आई होप, क्योंकि ये जीमैट क्लब का पैसेज है, तो आई होप यू सॉल्व्ड इट ऑन योर ओन, राइट, बिकॉज आई डोंट नो योर कैपेबिलिटीज, सो आई एम आस्किंग। मतलब सर्च करके आंसर तो नहीं देख लिया, ठीक है। ये सारे पैसेजेस जीमैट क्लब पे हैं बाय द वे, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सर गवाइन इन एंड द ग्रीन नाइट कंटेन्स बोथ क्रिश्चियन एंड पेगन एलिमेंट्स। ये बात फर्स्ट पैरा से दिख जाता है, ठीक है, पेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑल्दो इट इज नॉट क्लियर दैट ईदर पर्सपेक्टिव इज डोमिनेंट। तो ये बैलेंस्ड ऑप्शन है, नॉन एक्सट्रीम, राइट। और अगर आप ऑप्शन 1 देखें तो वो है एक्सट्रीम, इट वाज पेगन
बट एज अ रिटन टेल इट वाज क्रिश्चियन। तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, तो 1 मत ले लेना गलती से भी, 1 इज नॉट द आंसर, सो 1 आउट हो जाता है, उसी से हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा सा ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है। लेट्स सी, लेट्स रीड इट आउट। While it could certainly be argued that the poet portrays Sir Gawain as a good Christian hero in an attempt to infuse the story with Christian values, तो यानी कि सर्टेन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कुड सर्टेनली बी आर्ग्यूड, ऑथर का आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऐसा ऑथर बोल रहा है कि ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है, कि भाई सर गवाइन एज अ गुड क्रिश्चियन हीरो टू अटेम्प्ट टू इन्फ्यूज द स्टोरी विद क्रिश्चियन वैल्यूज। द क्रिटिकल टोन ऑफ द नैरेटिव, यानी ऑथर उसमें क्रिटिकल है, जो ये टाइमलाइन तो समझ में आ ही गया कि एक पुराना ओरल वो था, एक ओरली ट्रांसमिटेड पोएम था, ठीक है, एंड उसके बाद एक ऑथर ने इसको जॉट डाउन किया, लिखा, राइट किया उसने, और ऑथर का कहना था कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन यहीं पे आ गया था पहले ही उसके अंदर, ठीक है। तो that by critically editorializing the paganized form of Christianity embodied by Sir Gawain, in fact Sir Gawain खुद इसको बहुत critically देखते हैं, ये बात भी क्लियर है कि भाई क्रिश्चियनिटी क्यों आई इसमें। The poet is trying to correct what he sees to be the flaws of that form. From the perspective of this conclusion, it is clear that the poet only Christianizes the traditional legend to the extent that he criticizes the pagan interpretation of Christianity that is inherent in the behavior of its heroes, ठीक है। तो ऑथर इसको क्रिटिकली देखता है कि भाई इसको क्रिश्चियनाइज क्यों किया गया, राइट, या फिर पेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी रॉन्ग है, कुछ इस तरीके का हिंट है यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ऑथर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिश्चियन एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम प्रेजेंटेड इन द थर्ड पैराग्राफ। तो इसके लिए हमें थर्ड पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे यश एंड एनीवन एल्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, कि थर्ड पैराग्राफ पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। Go ahead. Yes, my friend, what's your answer? यूट्यूब लाइव में टू वे कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल है, चैट बेसिस पे करना होता है ना। So if you could talk, maybe you could tell me your answer in a swifter manner. Mr. Yash, I think it is sufficient time given. Let us begin the discussion. Okay. So ऑप्शन ए देखते हैं, क्रिश्चियन एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ऑथर का इंटरप्रिटेशन पूछा है, पैसेज में एक तरफ दिया है पेगन इंटरप्रिटेशन, एक तरफ दिया है भाई एक तरफ प्योर पेगन है, एक तरफ प्योर पेगनिज्म, पेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी है, और एक तरफ है आपका
द क्रिश्चियन राइट विंग. ऑथर इन सबसे अलग है. ठीक है, ऑथर इज वेरी डिफरेंट. ये लास्ट लाइन में आपको दिखता है कि दिस इज वेयर द आंसर इज हाइडिंग. Those who would argue that the poet intends to portray Sir Gawain as the perfect Christian hero would point to the description of his chivalric qualities. मतलब जो लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि the poet intends to portray Sir Gawain as a perfect Christian hero would point to the description of his chivalric qualities. The poet does indeed describe Gawain's Christian virtues generously. He even makes a special aside मतलब एक side का comment early in the second fit to describe the significance of the pentacle embossed on Gawain's shield and to explain why the pentacle is proper to that peerless prince. तो ऑथर ने उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके उसको परफेक्ट क्रिश्चियन बना दिया है एक तरीके से. The author then delves into a lengthy enumeration of Gawain's Christian virtues. What is more, the fact that he uses the pentacle, a pagan symbol, to do it would seem to suggest that the author does indeed intend to add a Christian interpretation to the pagan legend he is retelling. Taken in its larger context, however, this passage takes on a different significance. यहाँ से आता है author का interpretation. अभी तक author बात कर रहा था अगर ऐसे बोलोगे तो ये बोल सकते हैं, वैसे बोलोगे तो ये बोला जा सकता है. In further examination of the poet's description of Sir Gawain, it becomes apparent that the knight's seemingly perfect Christian behavior is superficial. मतलब सर गवाइन का इंटरप्रिटेशन जो है, पोएट का इंटरप्रिटेशन जो है, क्रिश्चियनिटी उसमें सुपरफिशियल दिख रही है. A contrast can be observed between his Christian words and the actions and his decidedly un-Christian motives. ठीक है. So one theory is that by emphasizing this contrast, the poet intends to denounce the pagan misunderstanding of the Christian message. तो ऑथर इस इंटरप्रिटेशन के साथ ज्यादा थोड़ा सा साइड कर रहा है. ये देखिए, pagans and Christians differ in the interpretations of the Christian symbolism in the story. पूरी बात ही है pagan interpretation of Christianity. तो pagans and Christians differ कैसे हो गया? The entire thing is about the pagan interpretation. A pagan cannot have motives that are acceptable from a Christian perspective. बहुत एक्सट्रीम है. Someone cannot have any of those motives. मतलब ये तो एकदम जीरो इंटरसेक्शन हो गया. पेगनिज्म अलग, क्रिश्चियनिटी अलग, ऐसा थोड़ी होता है. एक्सट्रीम है. A pagan story cannot be used to convey a Christian attitude. Now, in a way, ये अच्छा है. इससे ऑथर साइड तो करेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन है बड़ा एक्सट्रीम. कैनॉट आ गया ना, तो एक्सट्रीम है. क्रिश्चियनिटी वॉज एब्सेंट इन आर्थुरियन स्टोरीज, अगेन बहुत ही आउट ऑफ स्कोप है. बीइंग अ गुड क्रिश्चियन इन्वॉल्व्स हैविंग बोथ द राइट एक्शंस एंड द राइट मोटिव्स. लास्ट लाइन. ठीक है. अनक्रिश्चियन मोटिव्स, यहाँ पे जो ये बात बोली गई है, इससे आप लास्ट आंसर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं अच्छे से. ये जो बात बोली है ना, द परफेक्ट क्रिश्चियन बिहेवियर इज सुपरफिशियल इन द पोएम. यानी कि ऑथर परफेक्ट क्रिश्चियनिटी किसको मानता है? जिसमें ये कॉन्ट्रास्ट ना हो. इन दिस पोएम अ कॉन्ट्रास्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन हिज क्रिश्चियन वर्ड्स एंड एक्शंस एंड हिज अनडिसाइडेडली अनक्रिश्चियन मोटिव्स. तो यानी बीइंग अ गुड क्रिश्चियन इन्वॉल्व्स हैविंग बोथ द राइट एक्शंस एंड द राइट मोटिव्स, इतना डेफिनेटली इन्फर किया जा सकता है. सो दिस इज 100% inferable, but rest are extremes. Yes. Did you understand? क्यों राइट है ई आंसर? थोड़ा ट्रिकी था ये एक्सप्लेनेशन. अगर आप राइट जगह पे ना जाएं लास्ट पार्ट पे, तो ये आंसर नहीं आ सकता बेसिकली. ठीक है. एक बार वाई लिख दो, समझ में आ जाएगा. आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Any doubts with this? You can also ask the questions, guys. Okay, since there are no messages, I will move on. Question. Go for it. Passage तो हमने पढ़ ही लिया है. तो let's solve this. Which of the following, if true,
what kind of question is coming? CR, critical reasoning, है ना? So in case of a CR question, what do we do? ध्यान से देखिएगा इसको. Which of the following, if true, would most undermine the theory mentioned in the final sentence of the passage? क्या steps involved हैं इसमें? First step, where in the passage is the theory? करेक्ट ना? कि ये जो थियरी बात कर रहे हैं ये है कौन सी? तो ये जो थियरी है ये लास्ट लाइन में यहाँ पे तो बता दिया गया है. कभी कभी ये बताते भी नहीं है कि कौन सी लाइन में थियरी है, तो आपको ढूंढना पड़ता है. In further examination of the poet's description of Sir Gawain, it becomes clear, apparent मतलब clear, that the knight's seemingly, मतलब actual नहीं, seemingly perfect Christian behavior is superficial. तो यानी कि जो नाइट है ये एक सार्कास्टिक वे में इसको पेंट कर रहा है उधर. A contrast can be observed between his motives and his words. ठीक है. अंडरमाइन करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा कि नहीं, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है. इसको बोलते हैं शैडो स्टेटमेंट. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द ऑप्शंस? नो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज एक्शंस एंड हिज मोटिव. दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. So option A बोलता है Sir Gawain is portrayed as the disingenuous in his exercise of Christian virtues. तो ये बात तो ऑलरेडी ये तो स्ट्रेंथन कर रही है बात, ये करेक्ट ना? अगर वो डिसइंजेन्युअस है, डिसइंजेन्युअस मतलब फेक. Another character in the story is also associated with pagan symbols and is praised straightforwardly for her Christian virtues. अब ये तो सर गवाइन के बारे में है ही नहीं. The character that we are focused on is Sir Gawain. Correct? Option C. Sir Gawain in the story prays to God to help him in battle. Actually that option B is good क्योंकि इसको लूप पे रख सकते हैं. Why? Because अगर एक और कैरेक्टर ऐसा हो सर गवाइन को छोड़ के, ठीक है, जो is also associated with pagan symbols and is praised straightforwardly for her Christian virtues. तो एक तरीके से ये सर गवाइन का उल्टा है, काउंटर. सर गवाइन को क्यों बोला गया है? सर गवाइन को बोला गया है कि you are associated with the pagan symbols, but you are not, but the actions that you have in the book are not a perfect embodiment of the Christian virtues, right? तो अनदर कैरेक्टर में अगर प्रेज स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉर, तो यानी कि बी इज अ गुड ऑप्शन. सर गवाइन इन द स्टोरी प्रेज टू गॉड टू हेल्प हिम इन बैटल. आउट ऑफ स्कोप, इससे क्या ही हो जाता है. अनदर कैरेक्टर इन द स्टोरी इज एसोसिएटेड विद पेगन सिंबल्स बट इज पोर्ट्रेड एज हैविंग नो क्रिश्चियन वर्च्यूज व्हाटसोएवर. तो अगर ये बात स्ट्रेंथन कर रहा है ऑथर को कि एक कैरेक्टर है जिसके पास सिर्फ पेगनिज्म है, पेगन सिंबल्स हैं उसके पास, but no Christian virtues whatsoever. So pagan interpretation खत्म ही हो गया यहाँ पे. Option E. A group of people in the story are portrayed as barbarians who are neither pagan nor Christian. तो उनकी तो हम बात ही छोड़ देंगे यहाँ पे. So in a way, your answer becomes B option. क्योंकि यहाँ पे this proves that the pagan interpretation of Christianity is incorrect. Is correct. The pagan interpretation of Christianity is correct. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं. Given the case made in the passage concerning the larger social purpose served by the which of the following the author least likely to regard
as an instance of the arts fulfilling this purpose, that purpose. खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है. पहले क्वेश्चन को समझेंगे. Given the case made in the passage, concerning the larger social purpose served by the arts. It's a different passage. अच्छा, तभी मुझे complex लगा ये. ठीक है. It's a different passage, so we will not do this passage currently. We will move on to some other types of questions. For example, this is your purebred critical reasoning. ये वाला करिए जरा. Explanation coming in 2 minutes, okay? Yes, whoever is watching, I will be expecting an answer. Take your time. Give me the answer that you think is best here. Yash, are you there? And if someone else is there, please write any message. So we will look at the question here. When a patient failed to respond to prescribed medication, the doctor hypothesized that the dosage was insufficient. तो थोड़ा अजीब पागल किस्म का डॉक्टर है. ये बोल रहा है कि जैसे ही पेशेंट पे दवाई ने काम नहीं किया, ये बात इसीलिए होगी कि डोजेज कम दिया गया है उसको. The doctor first advised doubling the dosage, but the patient's symptoms remained. It was then learned that the patient regularly drank an herbal beverage that often inhibits the medication's effects. तो पहले पता चला काम नहीं कर रहा है, नो इफेक्ट. फिर डबल किया गया डोजेज को, ठीक है दीदी. फिर डबल डोज के बाद पता चला कि वो हर्बल सूप लेता है कुछ, जिसकी वजह से जो इनहिबिट करता है इस पर्टिकुलर थिंग को. The doctor then advised the patient to resume the initial dosage and stop drinking the beverage. Logical so far. The patient complied but still showed no change. Finally, the doctor advised the patient to double the dosage and not drink the beverage. The patient's symptoms disappeared. Hence, the doctor's initial hypothesis was correct. काफी critical type का question है ये. Which of the following most accurately describes the manner in which the doctor's second set of recommendations and results applications support the doctor's initial hypothesis? तो guys, मैं आप लोगों को, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू ब्रेक इट डाउन
to its pieces. आप दोबारा एक बार पढ़िए इसको, दोबारा एक बार कोशिश करिए and give me your probable answer. बहुत easy type का question है. The language is easy, you will understand properly. तो सेकेंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया था? द फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में उसको बोला गया था कि डबल द डोज करो, ठीक है. एंड सेकेंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोला गया कि भाई तुम डबल डोजेज करो प्लस तुम भाई ये लेना बंद कर दो, जो भी तुम बेवरेज लेते हो, नो बेवरेज. तो जब उसने इस बेवरेज को मना किया तो इन अ वे द लोअर द डोजेज, लो डोजेज वाला प्रॉब्लम सिंगल प्रॉब्लम नहीं था. लो डोजेज वाला प्रॉब्लम was combined with the beverage taking in a way, and that was the reason that the medicine was not working. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी देखेंगे. They suggest that the beverage was not the only cause of the ineffectiveness of the prescribed dosage. There is one more thing which is low dosage. तुमने लो डोज दिया था इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था. ठीक है, एलिमिनेशन से आंसर बहुत जल्दी आएगा इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे. तो फॉर द नेक्स्ट वन, backyard gardeners who want to increase the yields of their potato plants should try growing stinging nettles alongside the plants. मतलब जो बैकयार्ड गार्डनर्स, मतलब जो एमेचर गार्डनर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल गार्डनर्स नहीं होते हैं, अगर उनको अपने पोटैटो का यील्ड्स बढ़ाना है तो दे शुड ट्राई ग्रोइंग स्टिंगिंग नेटल्स अलोंगसाइड द प्लांट्स. क्यों भाई, ऐसा करने से क्या होगा? Since stinging nettles attract insects that kill a wide array of insect pests that damage potato plants. तो भाई पोटैटो प्लांट्स के साथ अगर आप स्टिंगिंग नेटल्स उगाओगे, मतलब रखोगे, जो भी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो दे विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स जो कि आपके पोटैटो प्लांट को खराब करते हैं. तो अब ऑथर का ओपिनियन क्या आ रहा है कि इट इज ट्रू दैट स्टिंगिंग नेटल्स आल्सो अट्रैक्ट एफिड्स. मतलब अलोंगसाइड वो इंसेक्ट्स इट आल्सो अट्रैक्ट्स एफिड्स and that many species of aphids are harmful to potato plants. तो यानी कि और भी अच्छा हुआ एक तरीके से potato plants के लिए. But that fact in no way contradicts this recommendation because तो ये para completion है, very standard question of XAT. ठीक है, stinging nettles require little care and thus are easy to cultivate. अब ये how easy to cultivate, क्या ये reason है? It no way contradicts, right? Some types of aphids are attracted to stinging nettle plants but do not damage them. तो भाई some types of aphids are attracted to stinging, क्या ये रीजन हो सकता है कि
it no way contradicts, only some types. The types of aphids that stinging nettles attract do not damage potato plants. तो एक तरीके से ऐसे समझ लो that many species of aphids are harmful to potato plants है, ठीक है. तो यानी कि जितने ज्यादा aphids होंगे वहां पे उतना ही harmful to the potato plants होगा. तो इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा आपका C. The types of aphids that stinging nettles attract do not damage the potato plants. Direct reason for this non-contradiction of the recommendation. ठीक है. So guys, do some questions like this, है ना? If you have any questions, let me know. I will be on Telegram. Have a wonderful day and night.